अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ेका और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेसवे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है तो वीडियो का टाइटल है टूरिंग द नागपुर टू मुंबई समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे इन अ Mercedes AMG E60. This is the Mercedes-AMG E63S and it has a very important role to play in today's road test. And I mean road test in a very literal sense. Welcome to the brand new Nagpur to Mumbai expressway, officially called the Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg. Now we've got exclusive time on it, and let me tell you already, it's quite the road. Built to connect Maharashtra's sub-capital Nagpur and capital Mumbai, the Samruddhi Mahamarg is a 701-kilometer, 6-lane access-controlled expressway. For perspective, the Samruddhi Mahamarg is 7 times longer than the Mumbai-Pune expressway. The Samruddhi Mahamarg promises to cut travel time between Nagpur and Mumbai from the current 16 hours to just 8. At max attack and without traffic and without restrictions, the car I'm in would need 2 and something hours. For the uninitiated, the Mercedes-AMG E63S is an E-Class dialed up to 11. It's got 4 doors, 5 seats, and some say it's among the fastest ways to drop your kids to school. Its hand-built 4-litre twin-turbo V8 engine makes 612 horsepower and 850 Nm of torque, and that power goes to all 4 wheels or 2 if you so choose. The Samruddhi Mahamarg is designed for speeds of up to 150 km an hour, but the official speed limit will be 120 km an hour. Now if you do the maths, that's about 4 seconds of very intense acceleration in this E63S. At places, the Samruddhi Mahamarg is wide enough and flat enough to actually double up as a runway. Now theoretically, and I'm emphasizing theoretically, this is a place where you can actually max out a car like the E63S. In this very car, that's over 300 km an hour. But just don't get any ideas. It's patently dangerous to try any antics on a public road, especially a high-speed one as this. Any misdemeanors will be caught on the network of CCTVs en route. It's estimated that 30 to 35,000 vehicles will use the expressway daily. Today though, I have a large chunk of it all to myself. So excuse me if I'll be giving in to temptation every now and then. The drive acquainted me with some of the salient features of the route and reacquainted me with some of the highlights of the E63S. They cleverly place sound barriers near habited areas, and that's just as well because this E63S is very proud to be loud. The AMG really roars. In fact, the animals around might be wondering what's that angry beast in their neighborhood. Now on the subject, the Samruddhi Mahamarg is unique for animal overpasses that actually allow wildlife to cross from one side to the other without needing to cross the actual road itself. The strategically positioned overpasses provide safe passage for animals, almost like a walk in the park, while vehicles zip by below at 120 km an hour. And there's a lot of amenities for road users in the works as well. Over time, the Samruddhi Mahamarg will have 21 wayside amenities with
food courts and petrol pumps, and importantly, each of them will have EV charging stations. So it's going to be quite a future-proof route. Now, as the visuals would have established already, the Samruddhi Mahamarg will be largely straight with gentle curves, requiring minimal input at the steering wheel. If there's a road built to test the advantage of ADAS features like adaptive cruise control and lane keep assist, this is it. The most steering you'll have to do is on the vast interchanges, of which there'll be 22. Interestingly, the toll collection booths will only be on the exit and entry ramps and not on the main expressway itself. When the road is fully functional, it'll be absolutely ready with FASTag. So this will be a fully seamless experience. But I'm going to do a ceremonial stop. I want that toll receipt for posterity's sake. Before you ask, the toll has been set at 1.73 rupees per kilometer for a car. So an end-to-end journey will cost about 1200 rupees in tolls. There you have it. Back on the expressway, there's more to make of road and car. With the cruise control set to 120 kilometers an hour, which is the speed limit for this road, this E63S doesn't feel all too different from the bog standard E-Class. It's really comfortable and feels like a car that'll do this journey all day. And what can I say about the road itself? It's an absolute world apart from the current highway between Nagpur and Mumbai. And if you actually zoom out, it's not just the travel time saved between these two major cities, but what this road means for all of Maharashtra. It runs through important centers like Amravati, Aurangabad, Ahmednagar and Nashik, and will eventually connect 26 talukas and 392 villages. This road really has the potential to change the face of Maharashtra, with as many as 18 townships planned along the route. The Greenfield Expressway will also be green, with 11 lakh trees proposed to be planted along the route. If there's anything to bring up about the road, it's that the concrete surface isn't as smooth as an asphalt road would have been. Then again, this road will require less maintenance, and engineers say the surface will also smoothen as the road comes into use. And the good thing is that date is coming soon. The Nagpur to Shirdi section of the Samruddhi Mahamarg opens in May 2022, and work is on in full swing to ensure the entire 701 kilometer road, including a 7.7 kilometer tunnel between Kasara Ghat and Igatpuri, is open to the public by May 2023. The Samruddhi Mahamarg is one of Maharashtra's flagship infrastructure projects and one very close to Shri Eknath Shinde, Minister for Urban Development and Public Works in the government of Maharashtra, who took a tour of the road in the quiet confines of the all-electric Mercedes EQC. ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज कार है और ये वर्ल्ड क्लास कार है, वर्ल्ड क्लास रोड पे चल रही है। ये रोड ही वर्ल्ड क्लास बनाया है, इसे मतलब लोगों के लिए एक बहुत ही एक स्मूथ राइड है। Here's the Honorable Minister on the scale of the job and getting it done within 5 years. सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हाईवे होता है, तो उसको लैंड एक्विजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें इस समृद्धि हाईवे के लिए जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वो रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। पहले तो देखो शुरुआत में कई लोगों का अपोज था, यहाँ पर काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे, रेजिस्टेंस था, और फिर उनको बताया कि वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर मैंने खुद एज ए विटनेस मैंने साइन किया, खुद उसको विश्वास दिलाने के लिए। और उसका विधानसभा असेंबली में भी कई लोगों ने पूछा कि शिंदे जी आपने तो कुछ नया ही शुरू कर दिया है, तो मैंने बोला ठीक है शुरू किया है लेकिन उसका फ़ायदा होगा ज़रूर। फिर वो मेरा आइडिया जो है काम आ गया और लोगों को मैंने कहा कि आप आपकी ज़मीन दीजिए और आपके अकाउंट में विदिन 2 आवर्स RTGS के माध्यम से आपके पैसे जमा हो जाएंगे। हम लोग चले गए, 2.5 घंटे में मुझे फ़ोन आया उस फार्मर का, पैसे जमा हो गए। ऐसा एक भरोसा जो ट्रस्ट है वो डेवलप होते गया। फिर कहीं ये ऐसा मैसेज बहुत सब लोगों में गया कि ये समृद्धि के पैसे जो है वो समय पे मिल रहे हैं। फिर लोग खुद ही आ गए ज़मीन देने के लिए।
और फिर 1 साल के अंदर हम लोग ने पूरा लैंड एक्विजिशन किया रिकॉर्ड टाइम में। ये रिकॉर्ड है। और जैसे आप कहते हैं कि किसी भी शहर और ज़िला हो, राज्य हो, उसके जो रोड अच्छे होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी जिसकी अच्छी होती है, उसकी जो प्रोग्रेस है बहुत फास्ट होती है। मुझे एक याद आ रहा है कि जैसे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का उनका एक कोट है। उन्होंने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। We also got an insight on the eco-sensitive measures of the project from Shri Radheshyam Mopalwar, Vice Chairman and Managing Director of the Maharashtra State Road Development Corporation. See, the most important thing is, when it comes to environment and ecology, forest, trees, one thing we have done that we were told to plant around 1 million plants. What we are doing is we are actually planting 3.3 million saplings and almost various kinds. We are in complete consultation with Botanical Survey of India and in the local forest department as well as the state forest department. And in consultation with that, we have taken the local prajati, what they call local species, and we have created a plan. We are going to spend almost 900 crores on only environmental development of this road. Apart from plantation, which is, as I said, 3.3 million saplings will be there, right from creepers, bamboos to local varieties, and 3-tier plantation, all these things will be there. But what is more important is basically for wildlife also. We have partnered with the Wildlife Institute of India, Dehradun, and whatever was suggested by the High Power Committee of the state as well as by the Wildlife Institute of India, we have actually factored those in both, in the forest areas, in the sanctuaries and non-focus areas also. What they said, focus areas for wildlife and non-focus areas for wildlife. We have now almost in 700 kilometers, 76 wildlife underpasses and 8 overpasses, which are constructed for the first time of this kind. So we have been very, very particular that this expressway must become extremely environment friendly. Shri Anil Kumar Gaikwad, Joint Managing Director at the Maharashtra State Road Development Corporation, shed some light on traffic surveillance measures and had a word of warning for anyone planning to speed. As a part of ITMS, there will be surveillance cameras along the expressway, and our team will be monitoring that. High-speed vehicles will be penalized. So there is no obstruction on the entire 701 kilometer stretch, because there are 2 toll stations on the main carriage. One is at Nagpur, another is at Thane. So 700 kilometer stretch is without any obstruction. So there may be temptation for the drivers to drive at the fast speed, but due to all these surveillance and all that on the expressway, nobody will drive at higher speeds. They will be caught and will be penalized. After a fun day out, I have to say that the Samruddhi Mahamarg really is a road for all of us to be proud of. That it'll shrink distances and speed up movement is a given, but at a larger level, it has the potential to fast-track the development and prosperity of the regions it connects. It really has been an honor to drive on what can only be described as a world-class road. मुंबई पहुंच गए, मुंबई ओके जी जनाब। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी वो जो यूएस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बात बताई कि अमेरिका रिच है इसलिए नहीं कि उसके रोड अच्छे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अमेरिका बहुत अमीर है, बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए अमेरिका अमीर है। समझने वालों के लिए बिल्कुल सभी कुछ इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, कुछ लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा हमें सुनने को यही मिलता है कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक गरीब देश हैं, अफोर्ड करने वाले देश नहीं हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए इन्होंने कितनी गहरी बात करी कि अमीर ही वो देश हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टिविटी है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास अगर थोड़ी सी भी कोई रकम है तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएं तो आप अमीर होंगे। आप अमीर होंगे तो आप रोड बनाएंगे, तब तो रोड बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत ही नहीं रहेगी तो अच्छा तब होगी नहीं ना। पहली बात तो ये दारो मदारी उन्होंने बता दिया जिस पे है। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, बहुत ही खूबसूरत रोड, बहुत ही एक ठोस दिखने में, हमने टच तो नहीं करके देखा लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है वाकई कोई ठोस मटेरियल। अच्छा, मुझे कमी लगी, मैं जब भी इंडिया को देखती हूँ बड़ा सब ग्रीन जो है ना, लेकिन ये सिर्फ रोड बना है। अभी इस पे डिस्कस हो रही थी मेरे ख्याल में ना, इनका आगे 1 मिलियन प्लांट्स लगेंगे, 1 मिलियन, क्या खूबसूरत हो जाएगा, और आगे 3 मिलियन का भी उन्होंने जिक्र करा। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात जो वीडियो की, वैसे तो सब कुछ बहुत आतंक, बहुत आला, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मैं किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स दूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग। लेकिन सबसे खूबसूरत बात वीडियो की मुझे ये लगी कि वाइल्ड लाइफ के लिए 76 अंडरपास, वाइल्ड लाइफ के लिए सिर्फ, बताएं आप। अच्छा, कौन सोचता है इतना? अच्छा, होता क्या है? बिल्कुल, होता ये है कि सदियों से जानवर जो है ना, उनका एक रूट होता है, पता है आपको? बिल्कुल, आपने बताया था। एक उनका रूट होता है, वो एक उनका मौसम के हिसाब से आदत हो जाती है उन्हें वहाँ से गुजरने मौसम के हिसाब से। तो वाकई मैं कहता हूँ बहुत ही आला बात कि जानवरों के लिए भी इतना सोचा गया। अच्छा, हमारे यहाँ अभी मैं यही बात कर रही थी और यही मेरे दिमाग में घूम रही है ये बात कि हमारे यहाँ तो गफलत का ये आलम है कि पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं, रोड बना देते हैं चकाचक, उसके बाद उसको खोद रहे होते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन की जी पाइपलाइन डालना भूल गए, क्योंकि वो तो अलग डिपार्ट था, वो तो अलग डिपार्ट था, हमें तो खबर ही नहीं थी, हमारा तो कम्युनिकेशन ही नहीं था। और यहाँ जिसने बनाया है, एक तो पहली बात नहीं बोलूँगी, मैं सैल्यूट करूँगी उस इंसान को। आपने देखा कितना स्मूथ, बहुत कितना आला, कितना बेहतरीन, और उन्होंने भी वाइल्ड लाइफ तक का ख्याल रखा है कि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला ना हो। वो सदियों से जो गुजर रहे हैं, आप जैसे बताए थे, साल साल गुजरते हैं वो लोग असल में ना, के हिसाब से। हाँ, ऐसा होता है ना कि चरागाहें होती हैं और वहाँ यहाँ के जब सब्ज़ा ये खा चुके होते हैं तो आगे चले जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर एक मौसम आता है वापसी आते हैं। अच्छा, फिर इनका कोई एक मौसम होता है, बच्चे इनके अफजाइश नस्ल होती है, तो इस तरह का इनका एक सिस्टम चलता है, साइकिल है पूरा। अच्छा, बीच में रोड बन जाएगा ना, तो आपने उस कुदरत की चेन को जो सदियों से चल रही थी, आपने उसको तोड़ा, उसमें दखल दिया। जब वो चेन टूटेगी ना, तो उनकी जो नस्ल बढ़नी है वो मर जाएंगे, पता है आपको? हालांकि आपने उनको रास्ता रोक लिया, वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल उनका ज़िंदगी को आपने तोड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा गया है और रखना भी चाहिए था। और जाहिर सी बात है कि यार एक चीज़ ज़िंदगी में कम हो जाती है ना लाइफ में, यानी मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि आपने अगर कबूतरों को सबको मार दिया या आपने चिड़िया को सबको शहर से मार दें, तो आपका इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ परवान चढ़ती है, उसकी तादाद बढ़ जाती है, फिर उसका जो नुकसान होता है आपको वो और ज़्यादा शदीद होता है। एक जगह पे सांप को मार दिया गया, सारे गांव के सांप थे वो मार दिए गए, तो चूहे बढ़ गए, तो चूहे ने अनाज खा दिया, सारा अनाज उन्होंने खा लिया। तो पता चाहिए चला कि हाँ, कुदरत ने बैलेंस रखा है और हमें नहीं अमल दखल करना चाहिए। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात एक और ये कि मुझे इतना अच्छा लगा, ये सुनकर इतना अच्छा लगा कि 2 घंटे में, हमेशा हर प्रोजेक्ट में मैंने ये सुना है कि लैंड एक्वायर करने में बहुत मुसीबत हुई, बहुत परेशानी आई, बहुत मसले मसाइल हायल हुए, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट देख रही हूँ मैं जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ कुछ लोगों से वादा करा कि हम 2 घंटे में आपकी पूरी पेमेंट दे देंगे, आपका जो घर है, आपका जो वो है, उसका कंपनसेशन जो भी बनता है वो दे देंगे। और 2 घंटे में ही हमने, जब उनके पास आ गया, उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि जी हमें वसूल हो गया, हमें मिल गया, हमें मौसूल हो गया, तो उसके बाद लोग खुद चल कर आए कि इनकी इतनी अच्छी, यानी कि समृद्धि महामार्ग का इतना अच्छा हिसाब किताब है कि इतनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी अपनी लैंड का खुद उन्होंने सौदा करा, खुद आ गए चलकर, खुद अट्रैक्ट हुए। अच्छा, अच्छे खासा किलोमीटर, 8,831, बड़ा वक्त लगा होगा, बड़ा टाइम लगा होगा, और हाईवे तो अच्छा, इसमें नितिन गडकरी जी का नाम नहीं लिया गया है? नहीं। वजह वो दूसरे मिनिस्टर दिखाए गए ना, अर्बन मिनिस्टर वो हैं, नितिन गडकरी आई थी, यूनियन मिनिस्टर है, और ये अर्बन मिनिस्टर है, तो अर्बन मिनिस्टर जो है उनके अंडर में ही काम हुआ है। सही, जब भी उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फिर इस तरह का रोड हो और गाड़ी मर्सिडीज़ हो, तो क्या ही सफ़र होगा, क्या ही मज़ा होगा। नहीं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ भी नहीं कह रही, कुछ कहना चाह रही थी साथ में। अकेले मैं समझ गया था, मैं समझ गया था, मुझे और लगा नहीं, ले लेते, वाइफ को ले लेते, किसी को तो ले लेते। मैं समझ गया था आपके जज्बात, अकेले मतलब 8 घंटे का सफर आप कैसे, यार हाउ कुड इट इज पॉसिबल, समझ रहे ना आप इनकी सोच को, समझ गए वो आपको। साथ में एंजॉयमेंट हो, लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो, एक तो दिन में जा रहे हो, रात का सफर करना चाहिए। मैं तो थोड़ा भी दूर कहीं जाता हूँ, अकेले नहीं जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ किसी न किसी को साथ लेके जाओ, अच्छा लगता है, बातें करता रहता है इंसान, गप्पे शप्पे करता रहता है। हाँ,
किसको साथ ले जाते हैं? मतलब कहीं किसी को भी पकड़ लिया, दोस्त यार को, गली मोहल्ले में इधर उधर किसी को। सही है ना? आप क्या समझ रही थी? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें। और मैं कहता हूँ वाकई बहुत आला, बहुत खुशी हुई और बहुत ही चौड़ा रोड, 6 लाइन्स बता रहे थे मेरे ख्याल में। और अभी जो ग्रीनरी होगी, जो प्लांट्स लगेंगे, तो मुझे लगता है इसकी जो खूबसूरती दुबाला हो जाएगी। अच्छा, कहीं पे बीच में रुकावट नहीं है ना? कोई गड्ढा, कोई आपको एक हल्की सी खरोश है, ऐसा लगा कि ये डिसबैलेंस हो रहा होगा यहाँ से, यहाँ पे सही नहीं लग रहा, यहाँ से उठान ज़्यादा हो गई, यहाँ चढ़ा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल स्मूथ लग रहा था, स्मूथ बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपने किसी व्हीकल के अंदर बैठ के बहुत प्यास लग रही है, वो जूस पीना होता है, पानी पीना होता है, हम पीते हैं तो हमारे ऊपर सारा छलक जाता है। ये वो रोड था जिसमें मुझे लग रहा था कि अगर आप पानी पियो, जूस पियो, चाय तक पी सकते हो, बिल्कुल हल्की सी भी नहीं छलकने वाली है। ये जो टेस्टिंग होती है ना, ऐसी नहीं होती है इन चीज़ों को, मुझे लगता है पहले टेस्ट कर लिया जाता है। नितिन गडकरी जी ऐसे ही टेस्ट करते हैं, ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे पानी को। पानी पी के अगर पानी छलक गया, गिलास रखा था, उन्होंने बोला छलक गया तो तुम भी छलक गए दुनिया से। हाय क्या बात है, तुम ये ऐसा छलकोगे, ऐसा छलकाएंगे ना तुमको कि बस फिर छलक ही जाओगे तुम। डायलॉग लिखिए आपने। बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।